Hello, all. So, in the previous class, we were doing embeddings in deep learning, and here we are trying to understand how to get the context because the text or the words which you are using for interpretation, it is better to find the dependencies between them, as if you just simply convert them into numerics, that will be a lengthy representation depending upon the vocabulary. For example, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, whatever be the vocabulary you are taking. So that will be very long, that will be sparse, because only wherever the word is present you are going to see one, rest all zeros will be available. And the main thing which we are targeting there was context dependencies between the words, how they are related to each other, that we are unable to capture if we just simply use machine learning. So it becomes very much important that we have to apply some technique so that dependencies can be understood. So embeddings are the way by the help of which you are creating vector representation of each and every word, and they are also called as encodings, in a way that they do reduce the dimension. Why? As I already told, if you simply convert a word in TF-IDF vectorization, so there will be a long vector created, that will be a sparse one and with no dependencies. However, from this we are converting it into low dimension. Again, we are making a vector from high dimension. This will be a high dimensional to low dimension, that is embedding or encoding, where we are looking the relationship. Yesterday I gave you example where in a text or in a vocabulary, if you are available with cat, dog, fish, swim, so I need to find the vectors of them which will represent how these are related to each other. If I would say cat, how it is related to dog, fish, how it is related to other who are nearby context, nearby words. So fish will show good relation with swim. So accordingly, what I think is they have created those, like, who thought about the embedding, who already prepared the embeddings. They have taken all the words
what I believe is in this manner, in form of table, where the rows and the columns, they both represents the words only. W1, W2, W3, W4, W5, again W1, W2, W3, W4, W5. W1, W1, these are the same words, so obviously there is a full on relationship between them. Now, if I would take any word like cat, and here I took a word dog. So, how cat and dog are related to each other, I might be putting some numerical value. Okay, like, okay, they, they have done the analysis. These people, they did an analysis over the words. And this analysis will be according to the entire grammar which we see in the English point of view. If I just do talk about that, we have steps of text processing. Like first is the tokenization, then part of speech tagging, then parsing, then lemmatization. So all these steps were followed, and then, like, how a word can be related to another word, what is the subject, what is the attribute. Okay, but keeping each and everything in consideration, they might have annotated word to word relationship with some numerical value. Okay, for example, point 3, like this. So I can say that these are the weights. For example, these are the weights. And similar kind of stuff we have seen in attention mechanism also, if you remember. Attention mechanism. Okay, so how cat is related to dog? Okay, point 3. How cat is related to mouse? Okay, like, okay, point 5. There might be some terminologies, cat and the mouse. Okay, how cat is related to a word meow? Okay, point 9. So this is what they have done, annotation. And this word depending upon, okay, you are having how many words present? Okay, point 0.9, and for example any other word is present, so like point 0.5. Okay, you're done with that, and you can represent this in form of a vector. For example, I'm checking the context between the two words cat and the dog. Okay, so something like, okay, let's make a 2D vector. So it's like point 0.3, and it's like point 0.2, something like that. That's na in coding also we have seen. This is a 2D vector representation of a word cat. Similarly, we can make 2D vector representation for other words also. This is what we can do. Okay, so instead of writing the entire vector like this, it's better to convert it into context format, that how words are related to each other. This is embedding. And later on, uh, all these concepts now will turn up into that attention mechanism, self attention, multi head attention. Transformer is going to play the role. This embedding encoding will entirely, like, the core of transformer. Okay, because we are having those model like BERT, bidirectional encoding representation transformer. So like this only, the models are trying to understand the context only, how the words are related to each other. Context. Okay, and in this regards, yesterday we were seeing a code. Okay, what was the code? Let me share my entire screen, and we'll check the code now. Fine. So here it is. Very important, these concepts are, they are helping us in understanding how large language models work. Okay, not here, I guess, not on Kegel. I made the code on
notebook. Okay, here it is. So NumPy as NP I took. Then I created embeddings in which I vectorize each words in 2D format like this. Okay, each word like 2D. And I also told that the values present here are continuous in nature. Why continuous? There is a reason why they are continuous. Because relationship between two words can be between 0 to 1. Either there is no relationship between the words, either there is 100% relationship between the words, or there might be partial relationship between the words. So that is the reason you are having continuous embeddings. Okay, got it. So I created a dictionary in which I am assigning vectors to these words: cat, dog, fish, run, swim. You can see here that I printed also what embeddings randomly assigned to these words are. Okay, cat, this is the embedding assigned. Okay, dog, this is the embedding assigned. Fish, this is the embedding assigned. Okay, and so on. So assigned embeddings to the words, and then here we have to update the embeddings. I will talk about it. First, let's go down and talk about what you are available in form of text. So here I am available with a text or corpus like cat run dog, fish swim, dog run fish. This is a corpus or the text available with me. Data. What ultimately we have to do in the embeddings is, see, already you have given a vector annotation to the words. Cat also, dog also, you have given vector annotation. I need to update these vectors in such a way that they, if related, if they are showing the same context, they should come closer. Okay, they should come closer. Just like an example I told, king, queen. Okay, so these two words, they are having a similarity related to like royal family. So their vectors are closer. Initially, we have embedded them. Okay, we have given the vectors. That's a random assignment of the vectors to them. However, we are trying to update. Okay, we will check in our corpus each and every word how it is related to other word. We will update it, and if they become closer to each other, obviously at this particular stage I came to know that there is a relationship between the words. Okay, that means we are looking forward for similarity. And it's not a new thing to us. You already know about this term, cosine similarity. In cosine similarity, what you do is, if you are available with the vectors, then you take the dot product AB cos theta. If two vectors are closer to each other, okay, that means there is a very least angle between these two. So theta will tend to 0, and theta tend to 0, cos 0 is 1. Okay, so there will be straightforward the product AB. Okay, and this will show high similarity between the words. And if the vectors are far away from each other,
Okay, if the vectors are far away from each other, for example, this is A and this is B, angle between them is 90. That means there is no relationship because cos 90 is 0. So you first try to do one thing is, you initially, step number 1, initially vectorize each word, give vector annotation to it. That is because of encoding or embedding. Second is update the vector. Okay, updation. Third can be identifying the similarity between them by applying cosine similarity. Identify similarity. This is a kind of maths which you can apply, that how two words are related to each other. See, machine, I already told maths. Okay, without this, nothing is possible. Okay, fine. So that's what I came to know, which I'm discussing with you all. Okay, so this is your text. 10 times you are trying to iterate your model, and from here the iteration starts. For epo in range, number of epos, that means, okay, you can take from 1. Okay, for sentence in corpus, okay, pick up this first. Let us suppose this is our first sentence: cat, run, dog. For word in sentence, okay, pick up a word from this particular sentence. Let's take cat. Okay, context equal to get context. That means pass the entire sentence and the word both. And where you have to pass, okay, in this method, get context words. Okay, so here, pass the sentence. That means cat, run, dog, and the target word. What is the target word? Currently, my target word is cat. Okay, so here I'm taking what? Okay, let me explain this in a fresh page. You are taking the sentence that is cat, run, dog, and your target word is cat. Okay, fine. Then what you are doing here next? Context equal to W for W in sentence. W for W in sentence. If W is not target, that means cat, cat. That's not we are looking forward for. Okay, that's not we are looking forward for. We are looking forward for W for W in sentence. What does it mean? W for W in sentence. What is W here? For W in sentence, what does it mean? You are applying again a loop in the entire sentence, and you are returning a word. You are returning a word. Okay, and that word will be the context, and the context will be, okay. Understand what you are trying to do. You are applying loop here in this particular sentence: cat, run, dog, and you are saying that return a word that is not a target word. Okay, my target currently is cat. So if I apply a loop here, I got cat first, I will not return it. Huh. Run and dog I will return. So run and dog will be returned from here. Okay, that will be assigned to context. This is my context. Run and the dog. Okay, that will be written. Now what happens next in the code? Okay, this function is over. Now update embeddings, word and the context. So what was your word? Cat. What is your context? What is your context? Here you mentioned, you got it. Your context is run and the dog. So now you are passing cat, comma, run and dog into update. Here you are looking forward to find the relationship between these words. Okay, you're trying to identify the relationship. Okay, so this is the update method above. Here is the update method. So your target word is cat.
Context words are run and dog. Okay, let's assume the learning rate is 0.01. Okay, so target vector is equal to embeddings target word. Okay, target vector is embeddings target word. What is the target word? Cat. So just pick up the vector which is assigned to cat initially. What was the vector given to cat initially? This one. This is the vector given to cat. 0.04 and 0.31. This is the vector of cat. Okay, so pick up cat vector. Okay, it will be like 0.04 like 31 whatever. This is my target vector. Okay, then what next I am doing? The next is context vectors. Take the context vectors. Okay, in context vectors I am, what I'm taking is, take the embeddings of these vectors and find the mean of them. Find the mean of them. Okay, so np dot mean, embeddings of each and every word which is present in the context word, find the mean. Okay, so what are the words? Run. Okay, where it is? Run. Run and a dog. These two are the vectors. Okay, these two are the words, and here are the embeddings for them or the vectors for them. Take the mean of them. Okay, so this plus this divided by 2, this plus this divided by 2. Okay, is this the correct way? Axis equal to 0. Axis equal to 0 means row wise. You are going to take the mean like row wise. Okay, so am I right or wrong? I told this plus this divided by 2. Am I doing column wise mean, or is this correct? Can you please tell me? Axis equal to 0. Axis equal to 0 means row. Axis equal to 1 means column. So are we taking the mean row wise or column wise? What we are doing? And how it can be taken? Yes. What do you suggest? This is dog vector and this is run vector. Axis equal to 0. That is row. So how to find the mean? Np dot mean. Yes. Okay. Fine. I think, let me print it. Print context vectors. Okay, here I am printing the context. Okay, it's already printing here. No need to worry about, it's already printing. Why should I write it again? Fine. And what I got in the printing, this is the first print I got. 0.38. How I'm going to get the 0.38? How you are going to get 0.38? If I can add these two, shall I get 0.38? Is it possible that if I add these two, will I get 0.38? Yes, tell me. सो तो नहीं गए? ये बड़ा ध्यान से सुन रहे हो, या तो सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0.38 आ जाएगा। लग रहा है आपको? 0.31 एंड 0.49, इसको मान लो अप्रॉक्स 5, इसको मान लो अक्रॉस 0.32, तो 0.37 तो मेरे को यहीं से दिख रहा है अप्रॉक्स पे। हियर आई एम गेटिंग 0.38 समथिंग, ऐड करने पर आ जाएगा। एंड इनको ऐड करने पर, नाउ प्लीज टेल, तो यहाँ रन को ये आ रहा है 0.27, 0.72, ये आ रहा है 0.51, यहां से तो नहीं मिल रहा मुझे। अगेन ये तो नहीं मिल रहा 0.5। अच्छा, मिल भी सकता है, मिलेगा। मीन ले रहे हो ना बेटा, सम थोड़ी ना कर रहे हो, यू आर टेकिंग द मीन। डेफिनेटली आई विल गेट इट इफ आई ऐड दीज टू। 0.72 एंड 0.27 नियरली इट्स 1 के आसपास आएगा, उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 0.51 हो जाएगा वो। सही तो है।
तभी मैंने आपको पकड़ा कि बेसिक तो भूल भुला जाते हैं, फिर अब बड़ी बड़ी बातें करने से कोई सेंस नहीं है ना। अभी आपको मैंने यहाँ पकड़ा कि बताओ एनपी डॉट मीन है, एक्सिस जीरो है, तो रो वाइज होना चाहिए। सो रो वाइज मीन्स ओके यू हैव टू कंसिडर these, add these two divided by 2, add these two divided by 2, this is your vector. Okay, this is your context vector. And then this is how you have to update the vector. इस तरीके से करना है। अपडेट वेक्टर को कैसे करोगे? कंटेक्स्ट वेक्टर माइनस टारगेट वेक्टर। ओके, अच्छा ये जो इक्वेशन है, आपको नहीं लगता कि हम यूज करते थे ना, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, जहां हम लिख दे माइनस लर्निंग रेट डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, लाइक दिस। और हमेशा मैं कहता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, भाई गदर इक्वेशंस हैं ये, और ये कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कहीं ना कहीं मैच करते हैं ये सब चीजें। देखो आप, नहीं लग रहा ये स्लोप ही तो है, m, इसको ले लो x और इसको ले लो c, मैच हो जाएंगी ये। ओके, सो सर्टेनली यदि अपडेट करना है मुझे, सो व्हाट आई लर्न, ये उसी तरीके से context vector minus target vector multiply by the learning rate which I already mentioned 0.01, ठीक है, कर दो। और ये जो एम्बेडिंग्स हैं टारगेट वर्ड की, उसमें ऐड कर दो। देखो ये प्लस साइन है, प्लस इक्वल टू का यू वेरी वेल नो, तो मुझे नया एम्बेडिंग मिल जाएगा, न्यू एम्बेडेड वर्ड्स आई विल गेट। ठीक है, तो ऐसा आपको 10 टाइम्स ये करना है। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्ट करके ये करा ना, that how a word cat is far away from run, how a word cat is far away from dog। ठीक है, ये पता कर रहे हैं अपन। यदि अपडेट करते हुए if we got certain changes and the words vectors if they become closer to each other, relationship है, तो आपने रिलेशनशिप ही निकाल लिया। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड एम्बेडिंग और ये उसका कोड क्या होता है। ठीक, फाइन। तो ये एक तरीके से सिंपल एक अप्रोच है फॉर वर्ड एम्बेडिंग्स। यू कैन डिफाइन द अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग ऑल्सो। ठीक है, डीप लर्निंग का भी लगा सकते हो आप अप्रोच। ओके, सो हियर आई पुट दैट थिंग, like again take the numpy, take the sequential model, deep learning sequential लगाना है, dense ले लो, embedding layer ले लो, flatten layer ले लो, that's what you have to take। dense layer you very well know computation यही करेगी, न्यूरॉन है उसमें। embedding layer अभी पता चल गया embedding क्या करती है, what the embedding do। ओके, वेक्टराइजेशन, फ्लैटन 1D में कन्वर्ट करने का तरीका, दैट लेयर टू कन्वर्ट इन 1D। और फिर आप ये कह रहे हो टू कैटेगरिकल, ओके, सो आई नीड टू कन्वर्ट इनटू कैटेगरीज, हो सकता है टारगेट को कैटेगरी में कन्वर्ट करे। ओके, यही होगा। एंड देन हियर यू टुक अ टेक्स्ट, द कैट sat on the mat, the dog sat on the rug। Okay, so this is your first sequence, this is your second sequence। ओके, वोकेबलरी क्या बनी, द कैट sat on mat dog rug, यानी आई नीड टू फाइंड द यूनिक वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन माय टेक्स्ट। तो ये टोकन बनाया है तुमने, रिमेंबर दीज आर द टोकन्स, एंड this is the vocab you created, that is that is integer representation, annotating the words with integer। और याद करो अभी एलएसटीएम पढ़ाया, बाई एलएसटीएम पढ़ाया, आरएनएन पढ़ाया, सब पढ़ाया। और ये जो लिख रहा हूं ना मैं, ये सारी चीजें ये वही हैं जो आपने पढ़ी, हर क्लास में समझाई क्या होती है। व्हाट आर द स्टेप्स वी डू फॉलो टू इंटरप्रेट सिक्वेंशियल डेटा? यू आर अवेलेबल विद द टेक्स्ट। स्टेप नंबर 1 टोकनाइजेशन, स्टेप नंबर 2 फिट ऑन टेक्स्ट। फिट ऑन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है भाई, उसको इंटीजर रिप्रेजेंटेशन दे दो। ठीक है, थर्ड क्या होता है, सीक्वेंसेस। फोर्थ क्या होता है, पैड सीक्वेंसेस। एंड फिफ्थ होता है एम्बेडिंग।
ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आई यूज सच कॉन्सेप्ट्स इन RNN, LSTM, बाई LSTM पूरा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से बेसिक्स तो आपको आना चाहिए। पहले ये तो देख लो आप, NLP का एंटायर क्या बात करता है वो, बेसिक्स NLP, एंड देन ये सारी बातें। ठीक, तो मूव हम ऐसे ही कर रहे हैं। ओके, एंड नाउ लेंथ भी निकाल लिया। व्हाट इज द लेंथ, हाउ मेनी आर देयर, 0 to 6 है ना, तो 7 आ गई लेंथ। लेंथ ऑफ द वर्कैब इज 7, 7 वर्ड्स हैं। ठीक है, एंड टोकनाइज द टेक्स्ट एंड क्रिएट द इनपुट टारगेट। इनपुट और टारगेट तो देखो, कैट आएगा तो उसके बाद, सॉरी, द, इफ यू गिव द इनपुट एज द नेक्स्ट वर्ड विल बी कैट। समझ में आया? यही करा था ना मैंने, सीक्वेंस बना के नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। ओके, सो इफ द इनपुट इज द, आउटपुट इज कैट। इफ द इनपुट इज कैट, द नेक्स्ट वर्ड इज सेट। ओके देखो, कैट सेट का पेयर बना दिया, फिर सेट और ऑन का बना दिया, फिर ऑन और द का बना दिया, फिर द और मैट का बना दिया। ठीक है, एंड देन द एंड डॉग, डॉग एंड सैट एंड ऑन एंड द एंड रग। ये देखो बना दिया, ये पूरा पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद भाई उनके इंडेक्स पोजीशन निकाल लिए, इंडाइसेस दोनों के, इनपुट के भी टारगेट के भी इंडाइसेस निकाल लिए। इंडाइसेस बोले तो ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो द का होगा 0, कैट का होगा 1, फिर यहाँ पर कैट का होगा 1, सेट का होगा 2, सेट का होगा 2, ऑन का होगा 3, ऑन का होगा 3, द का होगा 4। ठीक है, तो ये कर लिए इंडेक्स, क्योंकि भाई अब सीधी सी बात है, ये जो है आपका ये मॉडल, ये टेक्स्ट फिक्स थोड़ी ना समझेगा, नंबर समझेगा। मॉडल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इन ये वर्ड्स है मैथ्स, तो उसको उसको तो मैथ्स ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकाल लिया ना आपने इंडेक्स, इंडेक्स देने के बाद कन्वर्ट इट इनटू अरे। ठीक है, उसको जो है अरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और अरे में कन्वर्ट कर दिया, बस ठीक है, मॉडल बना दो, सिक्वेंशियल मॉडल डू क्रिएट। यहाँ है एम्बेडिंग लेयर। तो आपका अब ये डेटा वेक्टर में कन्वर्ट होगा, और अभी सिर्फ अरे था, just build an array. Now while going through the embedding, you told that okay, input dimension is vocab size। कितना है भैया इनपुट डायमेंशन, साइज कितना है vocab का, 7। तो आप इतना बड़ा साइज दोगे, लेकिन भाई आउटपुट में तो सिर्फ 2 ही निकलेगा। दैट मीन्स ये दे दो तुम 7 का, 7 का, बट आउटपुट में आपने कहा 2। सो आई विल बी गेटिंग अ वेक्टर ऑफ 2 लाइक दिस, ऐसे कुछ करके मेरे को मिल जाएगा। हर एक वर्ड का ऐसा वेक्टर मिलना है मेरे को। आउटपुट डायमेंशन इज 2। ठीक है, इनपुट लेंथ 1, यानी भाई मैं एक एक शब्द करके दूंगा। आई विल गिव वन वर्ड बाय वन वर्ड, द एंटायर सीक्वेंस इज, मतलब जो है वो 7 शब्दों का है। आप आउटपुट में मेरे को 2 का बना के दे देना। यार इतने प्यार से कौन समझाएगा, समझाएगा क्या? क्यों भाई देवेश? था नहीं बोल। हाँ ठीक है, अभी बोल नहीं रहा, ऐसे थम्स अप कर दिया। ठीक है, बाद में क्या करो, उसको फ्लैट कर दो, फ्लैटन 1D में कन्वर्ट कर दीजिए आप उसे। अब यहाँ पर क्या है कि यू विल बी हैविंग 2D एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हो आप, उसको 1D में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन यू गेव इट टू द डेंस लेयर। ओके, तो डेंस लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन सॉर्ट मैक्स है। सॉर्ट मैक्स क्या है, बिकॉज द नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू द वर्कैब साइज, बिकॉज यू आर हैविंग 7 वर्ड्स अवेलेबल। सो आपने जो पूरा पहले तामझाम करे टेक्स्ट के ऊपर, टोकन, इंटीजर अनोटेशन, यू डिड ऑल दीज थिंग्स, देन इनपुट एंड टारगेट यू क्रिएटेड, यानी आपने एक्स और वाई भी बना दिया। फिर आपने एक्स को अरे में कन्वर्ट करके फिर उसको उठा के दे दिया किसको, एम्बेडिंग को। एम्बेडिंग ने उसको कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में, उसको आपने फिर फ्लैटन करते हुए 1D में कर दिया, और उसके बाद उठा के डेंस पे दे दिया। अब डेंस में तो आई डू हैव द एंटायर वोकैब, 7 है वो, 7 वर्ड्स हैं, यू विल बी हैविंग 7 वर्ड्स। अब होगा ये कि शॉर्टमैक्स प्रोबेबिलिटी बताएगा, वट एवर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड जो कि नेक्स्ट होनी चाहिए,
अभी तो खैर तुम क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो मॉडल को, दैट मीन्स हाउ यू आर ट्रेनिंग, इफ द वर्ड द विल कम, cat will come, if the word cat will come, sat will come. So this is what you are doing right now, training is going on. तो ये ऐसे ट्रेन होके सीख जाएगा मेरा मॉडल, अगली बार भाई उससे प्रिडिक्शन करवा लूंगा मैं। ठीक है, ऑल राइट, तो वो सीख गया, आपने लगा दिया एडम ऑप्टिमाइजर और ये सब कर दिया, एक्स और वाई बन चुके थे, और टारगेट की वन हॉट एनकोडिंग कर दी। तो वन हॉट एनकोडिंग में सीधी सी बात है, वन हॉट यू नो, वन हॉट और डमी की बात करें अपन, सो यू नो अबाउट देम। ओके, आई एम हैविंग 7 वर्ड्स, ठीक है, सो 7 वर्ड्स हैं मेरे पास, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो वन हॉट एनकोडिंग, यू नो व्हेन द वर्ड द विल बी देयर, तो ये 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे, और फिर ये कैट रहेगा तो 0 1, बाकी ये रहेंगे। तो ये वन हॉट एनकोडिंग कर दिया आपने। ओके, फाइन, this is the general approach for your deep learning architecture and model and training and how to give the input and take the output, ये पूरा रहा। 100 इटरेशन से ट्रेन कर दिया आपने, हो गया, फाइन, एंड ये अपडेट कर रहे हो, हियर यू आर अपडेटिंग, एक्सट्रैक्ट द एम्बेडिंग्स फ्रॉम एम्बेडिंग लेयर। ठीक है, तो 100 इटरेशन तक जो एम्बेडिंग्स में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं ये अपडेट होंगी। ओके, सो मॉडल डॉट लेयर 0 गेट वेट्स 0, एक्सट्रैक्ट द एम्बेडिंग्स फ्रॉम द एम्बेडिंग लेयर, ओके, एंड देन प्रिंट द एम्बेडिंग्स की जो ट्रेनिंग हुई है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, वन वर्ड बाय वन वर्ड यू आर टेकिंग, सो व्हाट द चेंजेस अपीयर्ड। तो ये ट्रेन हुआ मेरा मॉडल, ठीक है, कोई बात नहीं, एंड ये देखिए हियर, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7, इतना भी मुझे दिया है इसने आउटपुट में, ये चेंजेस जो है वो मुझे यहाँ पर मिले हैं, एक्स्ट्रा एम्बेडिंग्स फ्रॉम द एम्बेडिंग लेयर, सो दिस इज हाउ आई गॉट, प्रिंट भी करवा दिया ये एम्बेडिंग्स है। Okay, either we can do in a simple scenario, or either we can use a deep learning to see how, what are the embeddings. You can print the embeddings in this way. Ultimately वही है, वेट है, ठीक है, तो वेट बोलूँ या क्या सही बात रहेगी इसके लिए, एम्बेडिंग्स में वेक्टर है, ये क्या देते हैं, वेक्टर सही है, वेक्टर। ओके, फाइन, ये आ गया, ये डीप लर्निंग का यूज हो गया आपका। तो in the above case you did small, like that, very simple approach, here you use the deep learning, and how LLMs वर्क, एलएलएम की वर्किंग भी देख लेते हैं एम्बेडिंग पे। तो भाई क्या होता है, अगेन एलएलएम की वर्किंग देखो, वो भी वोकैब बनाता है, ओके, एंड व्हेन यू गिव एनी इनपुट टू द एलएलएम, वर्किंग ऐसी होगी, यू जस्ट राइट अ प्रॉम्प्ट, ठीक है, दे दिया प्रॉम्प्ट, इनपुट दे दिया, इनपुट गया, एंड देन वही टोकनाइजेशन पहला स्टेप तो है ही, टोकन तो बनना ही है, टोकन बनने के बाद इंटीजर रिप्रेजेंटेशन बनना है, ये सब तो होना ही है, दैट्स व्हाट इट डिड, ठीक है, टोकन हो गए, इंटीजर बन गए। अभी यहाँ तो इस कोड में मैं दे रहा हूँ भाई, आई एम गिविंग फ्रॉम माई साइड, लेकिन वो होता है, सो इंटीजर बन गए, उनकी एम्बेडिंग आप बना दो, ये भी मैंने दी है अभी अपनी तरफ से, वो रैंडमली असाइन कर देगा, ठीक है, वो असाइन कर देगा एम्बेडिंग्स, तो चलो यहाँ भी दे दी। फिर देर आर पोजिशनल एम्बेडिंग्स, पोजिशनल, तो एम्बेडिंग एलएलएम्स में कई प्रकार की होती हैं, we can have, I think I have already taught in one of the batch, we are having positional embeddings, we are having sentence embeddings also, ठीक है, तो word where it is present means in a sentence, what's the position of the word, according to that I can annotate, that I can give some vector to it। तो positional embedding भी होती है, sentence embedding भी हो सकती है, पैराग्राफ की भी हो सकती है, पैराग्राफ एम्बेडिंग्स भी हो सकती है, पैरा एम्बेडिंग्स भी पॉसिबल है, ठीक है, ये सब पॉसिबल है। Okay, so here I am taking positional embedding. So for position 0, this, position 1, this, position 2, this, and position 3, this. These are the positional embeddings. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Okay, I am having four words, four embeddings I created. That means these are the vector representation of the words. ये तो words का vector representation है. और ये position का है, कहाँ पर वो वर्ड हो सकते हैं, किस लोकेशन पे हो सकते हैं. तो वर्ड की एम्बेडिंग और उनकी जगह, उनकी भी एम्बेडिंग आप तैयार कर सकते हो. पोजिशनल एम्बेडिंग तो ये होता है एलएलएम के अंदर, पोजिशनल एम्बेडिंग्स. एंड देन यू आर हैविंग अ टोकन्स. ओके फाइन, आपने टोकनाइज करा सेंटेंस को, टोकन है. एंड या यू हैव टेकन द एम्बेडिंग्स. ओके, कन्वर्ट द टोकन्स इनटू इनिशियल एम्बेडिंग्स, सो मेक एन अरे ऑफ देम. ओके, तो अरे क्या बन जाएगा, ये रहा अरे, इसका अरे बन जाएगा पूरा 0 1 2 3 का. ठीक है, हियर द अरे विल बी क्रिएटेड फॉर द ईच एंड एवरी वर्ड. ठीक है, अरे में कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 2 एंड 3 बन जाएगा. एंड देन उसमें पोजिशनल भी ऐड कर दो, ऐड पोजिशनल एम्बेडिंग्स ऑल्सो. तो यहाँ मुझे काम करना चाहिए था, प्रिंट करवा देना था यार आपके लिए. ठीक है, सो लेट मी प्रिंट टोकन एम्बेडिंग्स. ओके, एंड लेट मी, सही लिखा है, चलो ये कंट्रोल सी करो, टोकन एम्बेडिंग्स को अपडेट कर दो पोजिशनल से. यहाँ भी है, इसको मैं इन कोटेशन आई विल राइट फर्स्ट. ठीक है, ताकि वो डिफरेंस हो जाए, पता चल जाए मेरे को. और इसको कर देता हूँ सेकंड, ये अपडेटेड है सेकंड. ओके फाइन. सो वर्ड एम्बेडिंग्स एंड टोकन एम्बेडिंग्स ये कर दी. उसका लगाई अटेंशन मैकेनिज्म, ये रही, ये अटेंशन मैकेनिज्म लग गई. और अटेंशन होता क्या है यार, उसने 2017 में देयर वाज अ पेपर, अटेंशन इज ऑल वी नीड, और धमाका करा उसने. और भाई ये अपने दिमाग में से आया क्यों नहीं, क्यों निकल गया, क्या करा इसने, स्पेशल क्या हुआ इसके अंदर. हमने डॉट प्रोडक्ट ही तो लिया एम्बेडिंग्स का, मतलब एम्बेडिंग्स का ही एम्बेडिंग्स के ट्रांसपोज के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया. अरे वही भाई, क्या ये बनाई थी ना मैंने मैट्रिक्स. अरे कहाँ गई वो मैट्रिक्स, बस यही है वो. ठीक है, आई जस्ट मेड अ मैट्रिक्स, ये. तो मतलब आपस में ही डॉट प्रोडक्ट ले रहा है वो. ठीक है, दैट्स व्हाट इट डू. उनको कहता है अटेंशन स्कोर, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो, द रिजल्ट विल बी कॉल्ड एज अटेंशन स्कोर. ओके, एंड देन नॉर्मलाइज देम. तो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ अटेंशन स्कोर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑफ अटेंशन स्कोर, e की पावर x डिवाइडेड बाय summation of e की पावर x. That is how they normalize and apply the attention score to the embeddings. Then we, that means ये जो अटेंशन स्कोर नॉर्मलाइज होने के बाद आए ना, इनके ऊपर वापस एम्बेडिंग का डॉट प्रोडक्ट कर दो. अरे ये पढ़ा है कुछ दिन पहले मैंने संडे को इन माय जेन एआई क्लास. अटेंशन ये यही हो गया अटेंशन, बस ये अटेंशन हो गया. ठीक है, बस बात खत्म. तो अटेंशन भाई प्रिंट करवा दो, अप्लाई सेल्फ अटेंशन कर दिया और प्रिंट कर दिया कंटेक्स्ट एम्बेडेड. ये रन कर देता हूँ यार. तो ये आपके हैं व्हाट, ये फर्स्ट, दैट मीन्स आपने वो अरे बनाया था ना, ये अरे बनाया था ना आपने, टोकन एम्बेडिंग अरे. तो ऐसे हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8. अच्छा, ये ले लिया 0.1 0.2 0.3, ये कर दिया उसने. ओके सही है ना ये. ओके, अरे टोकन टोकन्स कितने, हाँ ये तो रहे यार, ये तो हैं. बस इनको प्रिंट करा और बाद में पोजिशनल एनकोडिंग से ऐड कर दिया. ये देखो पोजिशनल एनकोडिंग से ऐड हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया. दैट्स इट. ये फाइनल एम्बेडिंग से जो अपडेट हो गए. ठीक है, दिस आर द फाइनल एम्बेडिंग जब डॉट प्रोडक्ट हो गया. दैट्स इट, दीज आर अपडेटेड एम्बेडिंग्स. ये काम करता है व्हाट, हु, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये सेल्फ अटेंशन है, अटेंशन मैकेनिज्म है ये इतना. अटेंशन मैकेनिज्म है मतलब जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ड्स, देन नॉर्मलाइज इट एंड देन अगेन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, यही अटेंशन स्कोर निकाल लिया, इसी को नॉर्मलाइज कर दिया और भाई वापस से इसी को एम्बेडिंग के साथ ठोक दिया. पहले भी ठोका था, पहले भी एम्बेडिंग्स लिए थे, अभी भी एम्बेडिंग्स वापस ले लिया और बोल दिया कि ये लो तुम्हारा अटेंशन हो गया. गॉट इट. ओके,
That is the explanation. Okay, you understood the lecture? You understood embeddings? Because from the next class I will switch to the transformer. You understood the concepts? Okay.